will not only be felt by Muslim communities in the country, but will also harm constitutional protection guaranteed to citizens of the country. These include constitutional protection to Nagaland, Mizoram under Article 371A, 371G. Furthermore, cultural rights of Adivasi groups under Schedule 6 Constitution are also violated by any common civil code. In addition to religious rights protected under Article 24 of the Constitution, the most significant violation will be Article 29 of the Constitution. अब आप आखिर में देख लीजिए कि the UCC debate is ingrained bias in favor of the religious morality of the majority community. ये पूरा UCC का जो डिबेट है रिलीजियस मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप इंपोज करना चाह रहे सबके ऊपर. द स्टार्केस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज द लॉ ऑफ डिवोर्स. इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको. जो कंसल्टेशन पेपर 21st लॉ कमीशन दिया था, कंसल्टेशन पेपर proposes that unilateral divorce by Muslim man should be penalized. The debate in public domain has vilified unilateral divorce, which in turn has prompted petition Supreme Court challenging talaq-e-ahsan, talaq-e-hasan. The two अब दो ही बचे हुए हैं. The two remaining forms of unilateral divorce by Muslim man. हम ये क्यों बोल रहे? The underlying assumption debate has always been the process of divorce under Hindu Marriage Act 1956 is a superior method. यही तो बोल मेजॉरिटी जो मोरालिटी है. Where when one more or more of adultery, cruelty, desertion, unsoundness of mind or conversion or other faith has to be alleged and proved before a court in trial before divorce can be granted. हिंदू मैरिज एक्ट में आपको बताना पड़ता है adultery, cruelty, desertion, unsoundness of mind, conversion to other faith और उसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है before divorce is granted. Similarly, grounds are seen in Divorce Act of 1869 of Christians. This applies to divorce between Christian and Special Marriage Act that is usually cited as a shining example of egalitarian uniform law. अब आप इस्लाम में क्या है देख लो आप. इस्लाम में यह है कि पहले तो आप हिंदुइज्म में हम बता दिए आपको कि for cause divorce is intrinsically linked to the religious morality of Hinduism as practiced in many parts of northern India, under which marriage is sacrament that is meant for 7 lifetimes, as well as biblical idea of marriage as a vow before God to be together till death do us apart. In this understanding of marriage, a judge sitting as arbiter of societal morality must find the existence of grave intervening circumstances, which most oftenly qualifies as sin or curse in religion, before the marriage can be dissolved. This is in stark contrast to the Muslim personal law, under which the basis of divorce is the inability of spouses to live together or the choices of either of them to dissolve the marital tie and move on rather than determination of cause or arbitration of guilt. This is in consonance, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो डिवोर्स की प्रैक्टिस है, this is in consonance with our constitutional morality that has consistently moved in direction of being pro-choice. अब कौन सा एग्जाम्पल है वो? सुप्रीम कोर्ट का केस है, शक्ति वाहिनी यूनियन ऑफ इंडिया 2018. Supreme Court said it has been sublimely borne in mind that when two adults consensually choose each other's life partners, it is manifestation of their choice which is recognized in Article 19 and 21 of the Constitution. Such a right has the sanction of constitutional law, and once that is recognized, the said right needs to be protected, and it cannot succumb to the conception of class honor or group thinking, which is conceived on some notion that remotely does not have any legitimacy. वही बात सुप्रीम कोर्ट शफीन जहां वर्सेस अशोकन केम 2018 में कहा. तो अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रिज्म क्या है? द राइट टू चूज नॉट टू बी विद वन पार्टनर इज जस्ट अ कोरोलरी ऑफ दिस राइट टू चूज वन पार्टनर. अगर मैं चूज कर रहा हूं तो उसको ये इख्तियार भी है नॉट टू बी विद हिज पार्टनर. Society opinions on the desirability of continuation of the marital relationship, even at the cost of personal happiness, cannot be allowed to stand in the way of right to choose of either party to the marriage. The understanding that most of the world is now moving towards is that any intimate relationship irretrievably breaks down the moment either party to the relationship no longer wishes to be in a relationship for reasons that may not even be able to explain, leave alone prove before a court. Such an understanding respects the choice of each party to the marriage to choose not to be in that marriage. This is the understanding in Sharia or Muslim personal law, where marriage is an agreement between a man and a woman, and like any agreement, it can be dissolved by either side subject to settling of terms of separation,
such as payment of just and equitable compensation. That is also reflected in Section 125 CRPC and the Protection of Women from Domestic Violence 2005 respectively apply respective religion. और आखिर में, सॉरी 2 मरतबा बोल दिया आखिर में जर्नलिस्ट के साथ, तो इसमें और एक जो आपको ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ में और दूसरे उसमें आप देखिए शिकाक का एक वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में, शिकाक का. तो बेसिकली दिस रेस्पेक्ट द चॉइस ऑफ बोथ पार्टीज टू द मैरिज टू डिसॉल्व द मैरिटल टाई. तो the vilification in public discourse and by the media of the unilateral nature of the method of divorce available to Muslims actually betrays inherent bias in favor of the religious morality of the majority, which is actually contrary to the constitutional morality as has been demonstrated in the above 2 cases. अब और एक बात जो लोग बोलते सक्सेशन में बच्चों को हिस्सा नहीं मिलता मुसलमानों, हम उन लोगों को बताना चाह रहे, बल्कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितने दुनिया में रिलीजन है, कौन सा रिलीजन था जिसने खवातीन को, महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया? वो पहला रिलीजन था इस्लाम, जिसने महिलाओं को सक्सेशन में प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया. तो ये जो हाई मॉरल ग्राउंड जो लोग लेते हैं वो मत लीजिए, उनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए. अच्छा, दूसरी बात ये है, ये तो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड करे, उसमें कोपार्सनरी दिया गया. अब आप बोलेंगे इन्हों कैसा बोल रहे, ये सुन लो. आप बोलते हैं कि द शेयर ऑफ डॉटर बीइंग फिक्स्ड एट हाफ ऑफ द शेयर अलॉकेटेड टू सन is not because the daughter was accorded a lower status in Sharia or Islamic law, personal law. It is in fact reflective of the nuanced thinking that pervades Muslim law and makes complete sense in context of who conspectus of the rights available to women. In Muslim law, woman is given a meher. शादी से पहले मेहर देना पड़ता. मोहम्मद साहब बोल सकते, woman is given a meher or dower by a man as consideration of entering into marital tie with him. This meher is a substantial sum that must reflect the financial standing of the husband and is to be paid prior to the consummation of marriage or immediately thereafter unless the wife agrees to delayed payment. The woman is the sole owner of the meher, number 1. Husband se mil raha, which she thus obtains from her husband. As such, a woman has 2 sources of secondary wealth, one from her parents and other from her husband. As opposed to this, a man had only one source of secondary wealth. माने एक आदमी को inheritance from his parents and was required to incur the significant expenditure having to pay his wife meher in order to get married. Therefore, equity demanded that shares of the son and daughter in inheritance be fixed accordingly so as to do justice to both. इस्लाम में हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी बीवी की है, बच्चों की है, उसके माँ बाप की है. बीवी अगर काम करती है, ऐसा कोई मुस्लिम जर्नलिस्ट है या लॉयर है, डॉक्टर है, उन्होंने जो कमाते वो उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें हस्बैंड का कोई शेयर नहीं है. ये बात आपको समझ, ये जो बार बार प्रोपेगेंडा करते ये झूठ है, ये सच्चाई है. अच्छा, अब जरा मैं जो बोल रहा हूं जरा तकलीफ हो जाएंगी बहुत से जो लोग इस पे चिढ़ते ये सक्सेशन के ऊपर. This distribution appears to be inequitable when seen from prism of the Hindu understanding of distribution of property only because of perception bias. Women in Hindu society historically didn't get this right. वहां कन्यादान होता था, अभी भी होता. A part of family wealth had to be given as dowry to the husband as consideration for accepting the daughter. Number 1, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. This dowry was given to the husband family and such did not add to the woman's individual wealth that she controlled. अगर आप डाउरी दे रहे तो बच्ची को नहीं मिल रहा, वो तो दूल्हे मियां को मिल रहा. यहां पे क्या हो रहा, दूल्हे मियां उल्टा दे रहे. In this model, the man has 2 sources of secondary wealth, one from his in-laws and other by of inheritance from his parents, while the woman has only one by of inheritance from her parents.
In this context, fixing equal shares of son and daughter in the inheritance may appear to be more equitable. However, even this appearance of equity is misleading. Despite the Dowry Prohibition Act 1961, the practice of dowry continues unabated in India. Each family exceeds its means in giving dowry to the husband family in marriage, both because it is seen as a reflection of status as well as because otherwise it may become ground for harassment of the daughter. After having transferred a considerable portion of their wealth in terms of money, jewelry and movable property to the husband family, to give an equal portion of inheritance to the daughters grossly skews the balance in favor of daughter and makes the distribution inequitable. The immediate consequence of this is that each family must then look to recoup this lost family wealth by demanding it from the family their son marries into, which makes dowry a self-perpetuating social evil. Once again, our constitution has taught us equality does not mean distribution of equal shares to all, but involves a more nuanced understanding of differences and allocating shares that are equitable on a more holistic view of how different individuals are differently placed. Therefore, Muslim law of succession is in fact more equitable given the complete paradigm of personal law that it sits within. And if we don't ask the majority to abandon their customary laws in favor of this more equitable system, we should at least demand and expect that Muslim law be spared the majority's clamor for uniformity. Conclusion में हमारे नोट में ये है, we urge the Honorable Commission to not to allow itself to be made a tool for political propaganda simply on account of the approaching election and drop this enterprise. However, if this Honorable Commission wishes to proceed with exercise, it must do so with seriousness and meaningful way, explaining what it means by Uniform Civil Code and placing a concrete proposal for public comment, giving adequate time for stakeholders to respond. Our country comprises of communities that diverse and far removed: Adivasis of Madhya Pradesh, Bodos of Assam, Madigas of Andhra Pradesh, Telangana, Siddhi Muslims, Kachi Memons, Gujar Bakrawals of J&K. Our constitution gives each of them right to conserve their way of life and recognize their personal laws and customs. I would urge this Honorable Commission to recognize this legislating away personal laws to follow such unclear goal of uniformity will mean that it will undo the gains made under 73 years of working of our Constitution, where each of these personal laws have been refined by constitutional courts. Before concluding, I would reiterate that any attempt to creating a mandatory UCC today will go against Article 19, 25 and 29 of the Constitution of India and undermine the intent and purpose of founders of Article 44 itself. अब जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब को हम 4 क्वेश्चन पूछे. नंबर 1 क्वेरी था, टाइम बचाने के लिए मैं आप खुद पढ़ लो वो 4 क्वेरीज क्या थे. एक था, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वेदर द पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर अंडर रेलेवेंट एंट्री नंबर 5 of concurrent list of 7 schedule of the Constitution can bring reforms of personal laws be justified though the said article has a specific limit ambit. तो ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्वेरी पूछे थे, whether codifying certain aspects of personal laws of certain communities on the basis of proposed law commission consultation paper and concern of Article 44 and the same are violations of fundamental rights guaranteed under Article 25 and 29. थर्ड हमारा क्वेरी था, whether codifying personal laws under the guise of Article 44 would not impact the pluralism within these minority groups, religious groups such as Sikhs, Buddhists and Jains, who are governed by provision in Hindu law. Fourth, whether Uniform Civil Code as contemplated under Article 44 of the Constitution of India would not adversely impact the legal status of Hindu undivided family as provided in Hindu law. Fifth, whether the statutory enactment of Uniform Civil Code by Uttarakhand state in exercise legislative power would not be contrary to Article 44 of the Constitution of India as it has jurisdiction throughout the territory of India. तो ये पहले लास्ट क्वेश्चन जो है ना, आप उसको पहले ले लेते हैं, जो उत्तराखंड का आजकल बहुत वो चल रहा है. ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाला गौड़ा रिटायर्ड साहब क्या बोल रहे, कैन ए स्टेट मेक अ लॉ, स्टेट मानी स्टेट गवर्नमेंट मेक अ लॉ on UCC. Uniform Civil Code essential refers to a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession as per Schedule 7 of the Constitution. Such subjects
come in concurrent list, entry number 5, wherein powers to legislate vest with both parliament and state legislatures. Accordingly, the state legislature may introduce amendments to the personal laws enacted by parliament, but it cannot be stretched to include that enactment of UCC for a particular state. तो उत्तराखंड का UCC नहीं बोल सकते उसको. If Uttarakhand or any state government brings any such legislation, it will require presidential assent under Article 254 of the Constitution of India. UCC in Article 44 of the Constitution mandates UCC throughout the territory of India, which was confirmed by the then Law Minister in February 2022. This constitutional position is further confirmed by the manifestos released by political parties. For instance, UCC was a part of a manifesto of 2009 general elections, but was not specifically highlighted in the manifesto of the party of Uttarakhand Assembly election. Therefore, I am of the view that Uttarakhand state government enacting the statutory enactment Uniform Civil Code is not sustainable in law. ये अब आपको जो 4 क्वेरीज जो हम पूछे थे उसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जिसमें गोपाला गौड़ा साहब वही बात बोले जो हम अपने नोट में दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले थे आर्टिकल जब ये आर्टिकल 44 आर्टिकल 35 था, डिबेट हो रही थी. फिर उन्होंने ये भी उसमें लिखे अपने ओपिनियन में, श्री B.N. राव द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टेटेड directive principles are intended as moral precepts for the authorities of the state. They have at least an educative value. The great jurist Sir Ivor Jennings thought they were only pious aspirations. Here, Justice V. Gopala Gowda said the idea to adopt one code for all personal laws was considered antagonistic to Article 19, that is at present Article 25. Secondly, उन्होंने ये भी बोले several articles, Article 15(1), 16, 25, 26 and 29 are embedded in the Constitution with clear intention to protect religious freedom and customary rights. Likewise, Article 26 of the Constitution ensures the freedom to manage the affairs of religion. Article 29 defines the right to conserve a distinctive culture. और important point जो Honorable Justice V. Gopala Gowda साहब हमारे legal opinion में ये भी दिए, जजमेंट्स का हवाला देके वो बोले, perusing this judgment, it is obvious that the court has absolutely no idea. ये एक जज लिख रहा है. Perusing these judgments, it is obvious that the court has absolutely no idea what a UCC looks like and what such a court should do. In each case, it has been offered as a panacea for a particular issue with which the court was faced, as though the only problem with India's personal law is not their misogyny or obsolescence, but the lack of uniformity. The court in all these cases cling to Constitutional Directive Article 44 as it were a clear articulation of the idea what UCC is. फिर जस्टिस गोपाला गौड़ा साहब 371A, 371G का हवाला दिए, नागालैंड, मिजोरम का, और फिर ये अपने fundamental aspects of family law. The validity of marriage is linked to the customs and ceremonies of the particular community. The inheritance rights of the members of family is different for communities in Kerala and Tamil Nadu. Who is capable of being adopted also depends on the custom and usage. The Hindu Minority and Guardianship Act 1956 does not automatically apply to members of scheduled tribes. The claim that since Hindus, अब जो claim करते ये UCC होना बोल के, the claim that since Hindus are governed by uniform law, why not everyone else falls flat? Why not everyone else जो बोलते, it falls flat at the very first step. The law is not uniform for all Hindus in the first place. While no doubt the Hindu code makes several aspects of Hindu personal law uniform, it leaves custom and local practice undisturbed in several aspects. अब बीजेपी के UCC के बोलते
है ना, गोवा में है। इवन द मच टाउटेड एग्जाम्पल यूसीसी, द पोर्चुगीज सिविल प्रोसीजर एक्ट 1939 एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज इन गोवा, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इट हैज डिफरेंट रूल्स फॉर कैथोलिक्स, different rules for other communities, and it even recognizes bigamy for Hindus. अगर कोई हिंदू लेडी को 25 और 30 साल के दौरान बेटा नहीं हुआ तो उनके हस्बैंड सेकंड शादी कर सकते गोवा में, ये उसमें है। इफ यूसीसी, जस्टिस वी गौड़ा साहब लिख रहे, इफ यूसीसी इज रियली अबाउट यूनिफॉर्मिटी इट विल रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज for the validity of marriages, abolish the concept of co-parcenary property, and remove all distinctions between converts and non-converts over the inheritance property. देखो आप, remove distinction between converts. हिंदू मैरिज लॉ में डिवोर्स का ग्राउंड है कि अगर के हस्बैंड एंड वाइफ कन्वर्ट हो गए, वो डिवोर्स का ग्राउंड है, डिवोर्स का ग्राउंड है वो भी। If uniformity in all respects is not desirable, then that is an acknowledgement of the folly of promoting UCC without understanding the specifics of what it entails. If the goal is to address inequities in personal law of different religions, such inequities must be addressed on their own terms instead of demanding adherence to UCC. Whether it is the courts, the Constituent Assembly, or even those who are proposing the UCC as a panacea to gender inequality in laws or national integrity, no one seems to have a clear conception of what a court would actually look like. तो ये हमारा नोट जस्टिस वी गोपाला गौड़ा, ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब का लीगल ओपिनियन, और हम जो पोजीशन पेपर दिए थे 2018 में 21st लॉ कमीशन को, वो सब ये बता रहा है कि यूसीसी की इस देश को जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जस्टिस BS चौहान जो 21st लॉ कमीशन में क्या बोले थे वो भी सुन लो आप, वरना आप लोग ब्रेकिंग न्यूज बोल के ओवैसी को सूली पे चढ़ा देंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आवर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इन इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इतना बड़ा स्टेटमेंट जस्टिस BS चौहान दिए थे, ये चीज है। तो आपको इंशाल्लाह अभी आपको हमारे लोग वो ये पूरे नोट्स जो हमारा रिप्लाई है लॉ कमीशन को आपको दे देंगे, आप लोग आराम से पढ़िए उसको। और मुझे यकीन है कि आपके पढ़ने के बाद आपके जहन में कोई सवाल पैदा नहीं होंगे। सर, ये डाइवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं। नहीं, मैं आप अगर पढ़ने के बाद, अभी तो पूछ लो आप, मैं बैठा जरूर हूं, पढ़ने के बाद अगर आप पूरे इखलास के साथ उसको पढ़ेंगे, पूरी सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ेंगे तो आप पोजीशन समझेंगे, हमारा आप पोजीशन समझेंगे। देखिए, जब आप मेरे को देखते ना, आप मेरे को देखते तो मैं आपके साथ क्यों बन जाऊं, आप मेरे साथ क्यों बन जाएंगे? आप मेरे को देखो, हाँ भाई मैं हूं, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं, एक आदिवासी है, आप कैसा अपना ओपिनियन आदिवासी पे डालेंगे, एक मुस्लिम पे डालेंगे? अच्छा, मुसलमानों में शिया भी है, जाफरी स्कूल ऑफ थॉट है, मुसलमानों में हनफी है, शाफाई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, अभी मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें ज्यादातर वो उसमें दया भागा लेकेंगे क्या आप लोग? बोलो हमारे को। तो मिडिल ग्राउंड क्यों नहीं देखने? नहीं, देखिए मिडिल ग्राउंड देखिए, क्योंकि डाइवर्सिटी है। आपका सवाल क्या है? डाइवर्सिटी है, सही बात है, लेकिन आपका सवाल बोलो मेरे को। नहीं, आप ओपिनियन, आपका सवाल बोलो। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते? आपके सजेशंस में यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते? अच्छा सुनिए, सब रिलीजन एक आप बोल दिए ना, सुनो। इसका सवाल ये है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही उसमें। अरे स्पेशल मैरिज एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, आप लोग उसको इस्तेमाल करो ना, क्यों नहीं कर रहे? स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आप सक्सेशन में एग्जम्पशन दे दिए, उसमें मुसलमान नहीं आते, अब उसमें एक्सेप्शन दे दिए, आदिवासी अप्लाई नहीं होता। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अब यूनिफॉर्मिटी क्या आप बोल रहे? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है आपका, नहीं इस्तेमाल करो ना आप। तो सभी को एक कॉमन ग्राउंड में लाके नहीं, सबको देखिए, सबके लिए है वो स्पेशल। यूनिफॉर्मिटी लाएंगे नहीं, कैसा लेके आएंगे आप बोलो? आप सजेशन नहीं, अरे आप देखिए, लॉ कमीशन तो कुछ सामने रख रहा ही नहीं,
21 लॉ कमीशन जो वर्किंग पेपर रखा था उसके बाद उन्होंने खुद बोल दिए द कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर अ थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे, जस्टिस BS चौहान अपनी रिपोर्ट में बोल रहे कि यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर अ थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हाँ, गोवा की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि पोर्चुगीज लॉ की और 25 से 30 साल महिलाओं की अगर हाँ। इस तरीके के जब लॉ है कि साफ तौर पर कि यहाँ गलतियां हैं तो या फिर उसको सुधारने की जरूरत है। अगर हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, महिलाओं के लिए भी हक की बात करते हैं, तो फिर क्यों ऐसे कानून को क्यों आप? अरे आप बीजेपी से सवाल करिए ना, ये बीजेपी की सरकार गोवा में है। एक मिनट सुनिए, देखिए बीजेपी का सीएम बोल दो, चलो हम निकाल देते पोर्चुगीज एक्ट, चलो निकालो ना भाई। आप सत्ता में आप है, मैं नहीं हूं, पावर में आप है। आप गोवा में खड़े रह के आज बोल दो हम निकाल देते, बोलिए गोवा में आप खड़े रह के नागालैंड में जाके बोलो, नागालैंड में आज भी सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता, नागालैंड में बोलो आप, चलो। अच्छा वो भी नहीं करते ना, आप चलिए आदिलाबाद में हमारे जो गोंड ट्राइब्स हैं उनको बोलो हम लाएंगे, हिम्मत है तो बोलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी आके बोलना गोंड ट्राइब्स में खड़े रखे हम यूसीसी लेके आएंगे। अच्छा वो नहीं कर सकते, सुनिए वो नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में कर दो आप, अब तो चुनाव है, मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स को बोल दो आप, चलो। एक मिनट आ रहा हूं प्यारे, आ रहा हूं, नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, सुनो तो सही, आप मुकम्मल करने दो। आप मध्य प्रदेश में नहीं बोलेंगे, राजस्थान में नहीं बोलेंगे, हाँ। अच्छा झारखंड, एक सुनो, ठहरो माजरा, ठहरो सर, मेरी बात तो सुनो आप, मेरी बात तो सुनो। झारखंड में हमारे दोस्त आते, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट निकाल सकते हैं आप, 1908 निकालिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो ट्राइबल्स के जमीन की हिफाजत करता, आप निकाल दो। संताल प्रगनस टेनेंसी एक्ट है झारखंड के संताल ट्राइब के लिए, निकाल दो आप, चलो बोलो झारखंड जाके, अभी आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? आप वो भी नहीं बोलना चाह रहे, आप सिर्फ करना क्या चाह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, यूसीसी जब आएगा, इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में, यहां हमारा मकान थोड़ी है। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप लोग मेरे से काबिल है, आपको मेरे से बेहतर हिंदू मैरिज एक्ट मालूम, इसमें आप लोगों की शादी भी हो गई, बहुत से लोगों की होना बाकी है, बाद लोगों की होना बाकी है। अब सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, इसमें मैरिज इज नॉट परमिटेड बिटवीन पार्टीज हु आर सपिंडास, वालिद की तरफ से 7, मम्मी की तरफ से 5, मगर उसमें क्या करे, देयर इज एन एक्सेप्शन कार्व्ड आउट इफ देयर इज अ कस्टम और यूसेज। ये क्या बात है भाई, अब ये चले जाएंगे ना, फिर यूसीसी को रहता क्या, बोलो आप, नहीं रहता ये। फिर आप आ जाइए सेक्शन 7 सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज, दिस सेक्शन अलाउज मैरिज ऑफ हिंदूज टू बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनी ऑफ मैरिंग ऑफ द मैरिंग पार्टीज, वे भी चले जाता। सेक्शन 22 चले जाता। अब आप सोच देखते जाओ, इसमें बहुत सी चीजें हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें सेक्शन 5 आप देख लीजिए, सेक्शन 6 है, ये बहुत सी चीजें हैं। अच्छा और एक चीज, हमारे तमिलनाडु के कोई है यहाँ पे, तमिलनाडु के नहीं, तमिलनाडु में हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 एप्लीकेबल ओनली टू तमिलनाडु, ये भी चले जाएगा। बहुत सी चीजें हैं सर। आप लोग देखिए, आप लोगों को हम ये बोलना चाह रहे, यूनिफॉर्मिटी और कॉमन लॉ में फर्क है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले, इसको मैंडेटरी मत बनाओ, ऑप्शनल बनाओ। पढ़ो आप डिबेट्स को, वो बीजेपी पढ़ना नहीं चाहती उन चीजों को। सर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि यूसीसी का मतलब न्याय की समानता है। मैं राजनीतिक देखिए, गवर्नर उनको गवर्नर रह के एक गवर्नमेंट की तायद नहीं करनी चाहिए, उनको गवर्नरशिप से रिजाइन करके ऑफिशियली बीजेपी का खंडवा पहन के बीजेपी की बात करो। आप गवर्नर रह के ये सब आप बातें,
आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैंड सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर का, तो आप रिजाइन कर दो गवर्नरशिप से, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए और बोलिए सब बातें। एक मिनट, एक You accept all our religious personal laws are scripture based and culture conventions based. I don't know. Do one minute. I have not understood. What do you mean? I accept. No. You tell me. What you? You rephrase that question. Please rephrase that question. Don't make me accept which I don't accept. Okay. एक मिनट मैं बोल। In the modern era, when we are talking about a secular democratic party country with a population 55% of Indian population is below 30 years. So सारी युवा वो चाहती है कि उनके social attitudes and social aspirations, international and global practices से मुताबिक रहो, irrespective of religion, class, caste and gender. So, what is your question? You are making a point. We are, how are you addressing the issues of the youth? Number one. Baby producing country, sir. We are a baby producing country with 55% population. Okay, right. Now, I understood. You are talking about a demographic dividend which India has. Number one, right? Yes. I want to ask this government, what have they done? If 50% of population at the age of 28, how many jobs have they given? What have they done? In last 9 years, what have they done? And this demographic dividend will not last forever. It will last till 2040 only. No other country in the world has a demographic dividend. And how do you take forward this demographic dividend and turning India into superpower is by giving them jobs. And do you know that in the government of India data says, which came out recently, that in 2020-2021, 1,80,000 Muslims are missing from higher education. Who's responsible for that? Please tell me. Various states, and the only state where the rate has not dropped is Telangana. What has this government done? You have stopped the fellowship of Maulana Azad to minorities, which includes Muslims in that. You have restricted pre-matric scholarship. Every empirical data says that the dropout happens at the primary level. You have stopped giving scholarship. And thirdly, country like Singapore and Israel, their law accepts Muslim personal law. For Israeli Muslim citizens, Muslim personal law is there. In Singapore, Muslim personal law is there. This argument of a Prime Minister or BJP, do Qanun. I happened to study in England, fortunately. And I have a degree to show. Wherein in Scotland has a different CRPC, England has a different criminal procedure. US, every state has different laws. Our country has different laws. Different laws are there every state का हर जगह पर है. यूपी में तो अब आया ना एंटिसिपेटरी बेल का, पहले तो था भी नहीं वो. So it is the responsibility of the government to look at this demographic dividend. But why do you want to finish off this pluralism? That is my concern. सर ये कहा जा रहा है. नहीं एक मिनट इसको बोल. Sir, with regards to any religion, it's not perfect. And you said that I may have missed a word here, but Islamic law is not uniform, context-based and culture-based, and you've used another word that I've missed. What I want to ask you is... Just hold on. You see, in Islam, you have Shias who follow the Jafri school of thought. Imam Jafar as-Sadiq radiallahu ta'ala. You have Hanafis, which are majority in India. Then you have Shafis. The Kachi Memons have also their own customary practices are there. This is what I meant. There is so much of pluralism in this. And it is there. Sir, just adding on. Yeah. With regards to polygamy and issues of succession, in issues of succession you've given a detail. First come to polygamy. That is more interesting to me. Sir, I'll just because I am happy only with one. If a successor of a deceased male, they don't have any issues, the property goes to him. But Property goes to? So if the deceased person has 2 daughters, then the daughter's property is divided between uncles and other families also. In Under Sharia law.
Okay. And what about in Hindu law? Sir, my No, question. no. What about Hindu? Sir, let me finish my No. question. Hold on. See, what about Hindu law? What about Hindu law? बोलो हिंदू लॉ को भी तो बोलो. देखिए मैडम, देखिए आप मैं आपको बोलो व्हाट अबाउट हिंदू लॉ. हिंदू लॉ में क्या है बोलो आप. सुप्रीम कोर्ट का एक केस है उसमें. Sir, that is my question. नहीं सुने Uniform law will be and solving no Lakota's that different that you are deliberately missing one point. Notice to you. You are protected under customs as a Hindu to do what you want to do. That is what I am saying. आपको प्रोटेक्शन है कस्टम का. मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको 1-2 दिन में एक चार्ट बना के आप सबको देता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को कितने प्रॉपर्टी के शेयर्स मिलते. सबसे ज्यादा शेयर मिलता मुस्लिम महिलाओं को. 10 जगहों से मिलता. 10 जगहों से मिलता. ये आप एक एग्जाम्पल दे रहे. अरे उसका क्या वजह है आपको बता रहा हूं मैं. उसकी वजह क्या है आपको बता दूंगा मैं. 10 मैं अनफॉर्चुनेटली मैं देर हो गई मेरे को रात में. मैं आपको कल ही देता हूं मना कि आज शाम तक देता हूं. आप देख लो, देख के फिर आप क्योंकि आपके सर्वे में आप करें वो सब चीजें हो. ठीक है, नहीं ठीक. वो आपको 10 जगहों से मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी का शेयर मिलता. उसमें है चीजें ये. केरला में हाल ही में एक couple they converted to a different Hinduism in fact to protect to secure the future of their daughters, otherwise the property will go to the brother now or the sister. Do you think that and it's not just, my question is not just pertaining to Islam, even with Hindus or any kind of religion there are these aspects which are controversial. Don't you think a uniform civil code will address those concerns, and why are you attributing that this is going to be a Hindu civil code? Exactly it is. Exactly it will be, because it will be majority and morality which will be imposed on the minorities and the Adivasis and the Christians and the Sikhs. You are against the 2 forms of talaq which are legally available to me. You want me to give divorce on the basis of how divorce is given within the Hindu community. Why should I follow you? Why should I follow you? मैं क्यों फॉलो करूं आपको? आपका तरीका क्यों अपनाऊं मैं? आपको पूरी इजाजत है आपका तरीका डिवोर्स का, आप करिए. आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं आप? यानी मैं 7 साल तक 4-5 साल तक खींचता रहूं.